Hi guys, welcome to Hamid's Fun Learning Hub. So today I will show you how to pay TDS through Challan under new Income Tax Act 2025. Okay, so 1st April 26 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो चुका है एंड 1st अप्रैल 26 से इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे हाउ टू पे टीडीएस थ्रू चालान अंडर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट गाइज। So first you have to go to income tax portal which is incometax.gov.in एंड देन आपको यहां पर देखिए इनकम टैक्स पोर्टल का भी चेंज हो गया है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको नीचे आना है। पहले क्विक लिंक कहां पर था? अंडर लेफ्ट साइड में होम पेज का अंदर था क्विक लिंक। नाउ फ्रॉम 1st अप्रैल 26 से क्विक लिंक आपका नीचे आ गया है। ओके, सो यह सब एक्सेस कर सकते हो। आपको जाना है, यू हैव टू क्लिक ऑन ईपे टैक्स। देन यहां पर देखिए सिलेक्ट एप्लीकेबल इनकम टैक्स एक्ट। एक है इनकम टैक्स एक्ट 2025 फॉर टैक्स ईयर 26-27 एंड ऑनवर्ड्स एंड इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स फॉर टैक्स ईयर 26-27। अगर आपका 26-27 टैक्स ईयर का अभी फिनेंशियल ईयर, अभी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर नहीं है फ्रॉम 1st अप्रैल 26, एक ही आपका ईयर है विच इज टैक्स ईयर। सो फॉर टैक्स ईयर 26-27 का अगर आपको टीडीएस पे करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दिस। एंड इफ यू वांट टू पे टीडीएस फॉर मार्च, ओके, मतलब फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 और 25-25, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 का टीडीएस पे करना है जो मार्च का भी ड्यू है, देन यू हैव टू गो टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, ओके, एंड देन क्लिक टू कंटिन्यू। But I will show you how to pay TDS for tax year 26-27. So you have to tick this option, then click to continue. Now e-pay tax पर आपको 10 नंबर देना है because TDS पेमेंट के लिए फर्स्ट अब 10 नंबर इज मैंडेटरी। सो यू हैव टू राइट योर 10 नंबर, डिडक्टर का 10 नंबर देना है, कॉन्फर्म 10 दोबारा देना है। नाउ मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। ठीक है, सो यू कैन यूज योर मोबाइल नंबर ऑल्सो बिकॉज दिस मोबाइल नंबर इज फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। नाउ क्लिक टू कंटिन्यू। सो पेज नॉट फाउंड, सो यह से नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, सो पहले जो था, पहले हम लोग जब टीडीएस पे करते थे यह से होता था यू डोंट नीड टू लॉग इन, बट अब आपको क्या करना है, अभी जो है अभी लॉग इन करना पड़ेगा आपको टू पे टीडीएस और टीसीएस। ठीक है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन एंड यू हैव टू log in through your 10 number. So after login, you have to go to e-file and then go to e-pay tax. e-pay tax पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर सेम देखिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो आई एम गोइंग टू पे टीडीएस फॉर इन टैक्स ईयर 26-27। So you have to select this option Income Tax Act 2025, then click to continue. नाउ यहां पर आपको देखिए आपको जाना है न्यू पेमेंट पर। ठीक है, क्लिक हेयर एंड यू हैव टू सिलेक्ट द टैक्स ईयर 26-27 एंड देन गो टू पे टीडीएस और टीसीएस एंड क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। ठीक है, फर्स्ट जो है फर्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट में माइनर हेड मतलब टीडीएस और टीसीएस पेबल बाय टैक्स पेयर। सो माइनर हेड इज 200, ये आपको याद रखना है। Then tax major head matlab if your deduct is other than company deductee, then you have to select 0021, and if your deduct is a company deductee, then select 0020. ठीक है, so suppose मेरा other than company है, so मैंने select किया 0021 and ये नया आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, प्लीज सिलेक्ट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द डिडक्टी, रेसिडेंट डिडक्टी एंड नॉन रेसिडेंट डिडक्टी। अगर रेसिडेंट डिडक्टी है देन यू हैव टू सिलेक्ट रेसिडेंट डिडक्टी। नाउ क्लिक टू कंटिन्यू। नाउ आपको जाना है डिस्क्रिप्शन पर एंड यू नो दैट जितना भी हमारा सेक्शन था 94C, 94J, 94I, 94D पूरा चेंज हो गया है। ओके, एवरी सेक्शन एवरी रूल सब कुछ चेंज हो गया है इनका टीडीएस में एंड इनकम टैक्स में। सो यहाँ पर फर्स्ट इज सैलरी का जो सेक्शन था 192 अब चेंज होकर आ गया है सेक्शन 392।
ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन आपको सेक्शन 392 एंड इसका कोड 1001। अगर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्शन 392 कोड 1002, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। कमिश्नर ब्रोकरेज, ओके, कमिश्नर ब्रोकरेज एक है सेक्शन 10, एक है section 393(1), table serial number 1, Roman 1. So if you want to learn TDS and TCS practically under Income Tax Act 2025, then you can join my 4 days TDS live master class, okay? So I'll tell you about after the class, about the courses after the class. So यहाँ पर आपको जिस सेक्शन का थ्रू अपने TDS डिडक्ट किया, you have to select that section. So मेरा सेक्शन इज प्रोफेशनल फीस। सो पहले जो था 194J अब चेंज होकर हो गया है। यू हैव टू सिलेक्ट दिस एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी सम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर होगा 2%, then you have to select section 393(1), table serial number 6, Roman 3, and code is 1026. And for professional services or consultancy services के लिए you have to select this option. You have to select this section 393(1), table serial number 6, Roman 3, D2, and code is 1027. So you have to select this code. Okay, you have to select this section and code. So यहाँ पर आ गया जो अपने section and code select किया. Now for TDS payment you have to write under tax column. So for example मैं यहाँ पर 100 rupees TDS पे कर रहा हूँ. So for TDS you have to write on tax column. ठीक है, एंड फॉर सैलरी के लिए सरचार्ज एंड ईसेज होता है। ठीक है, ये जो सेक्शन 393 जो है अदर देन सैलरी, इसके लिए आपको सरचार्ज एंड ईसेज नहीं होगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। सो ये ऐड हो जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आपने 100 ऐड किया। आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा दूसरा कोई सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। सो एंड सपोज मुझे और एक सेक्शन में सिलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ से सपोज मुझे पे करना है टीडीएस फॉर, सपोज मुझे सेक्शन 194C जो था, ओके कॉन्ट्रैक्टर, अब यहाँ पर हो गया है आपका सेक्शन 393(1), टेबल सीरियल नंबर 6, रोमन 1, DA। सो ये आपको सिलेक्ट करना है, मुझे पे करना है। सपोज मुझे टैक्स पे करना है से 50 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, टीडीएस पे करना है 50 रुपीज। सो मैंने 50 पे किया। नाउ यहाँ पर क्लिक ऑन ऐड। सो 1 इज 194J जो पहले नहीं होता था, एक साथ दो सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया। पहले क्या होता था, पहले आपको एक एक करके पे करना पड़ता था। फॉर 194C के लिए अलग से पे करना पड़ता था चालान, फॉर 194J के लिए अलग से पे करना पड़ता था। बट अभी अब डिफरेंट सेक्शन सिलेक्ट करके यू कैन पे ओके टीडीएस। सो सपोज टोटल इंटरेस्ट इज 15। सो मैंने 15 यहां पर पुट कर दिया, देन क्लिक टू कंटिन्यू। Now I have to pay total tax 115, 150 TDS and interest 15, total 165. Now click to continue. Now यहाँ पर you can pay TDS through net banking. If you have net banking, you can pay through debit card, you can pay at bank counter, मतलब through cash, through check, through DD. You can pay TDS, you can pay through RTGS or NEFT, you can pay through payment gateway including UPI and credit card. ठीक है, सो सपोज मुझे पे करना है थ्रू यूपीआई, मतलब फोन पे जीपे का थ्रू। सो मुझे सिलेक्ट करना है दिस ऑप्शन, देन क्लिक द बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, यूपीआई है। सो मैंने एसबीआई सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू कंटिन्यू। ओके, सो टोटल मुझे 150 पे करना है एंड इंटरेस्ट 15, टोटल 165। नाउ क्लिक ऑन पे नाउ बटन। Now you have to tick this option, I agree to the terms and condition पर टिक कीजिए। Now click submit to bank। Then जिस बैंक मैंने सिलेक्ट किया, मैंने एसबीआई सिलेक्ट किया था, एसबीआई में आ गया। Now you have to click on UPI because I am going to pay through UPI. Okay, so now click to confirm and QR कोड का थ्रू मुझे पे करना है। So I am going to pay 165 and so मैंने पे कर दिया 165 TDS and interest मिलाकर। So now you have to wait for a few seconds and आपका चालान भी जनरेट हो जाएगा। So your transaction status is success, click on OK। Now यहाँ पर देखिए चालान पेमेंट is successful। Now download here।
सो मेरा चालान डाउनलोड हो गया एंड ओपन भी हो गया। सो यहाँ पर देखिए टेबल फॉर्मेट में आ गया, पहले जो नहीं था। टोटल आई हैव पेड 165, ओके, एंड टुडेज डेट इज 165 आई हैव पेड एंड फर्स्ट अप्रैल 26 के लिए BSR कोड है ये, चालान सीरियल नंबर एंड 194.3 सेक्शन 393.1 टेबल सीरियल नंबर 6 रोमन 3, मतलब प्रोफेशनल फीस के लिए मैंने पे किया 100 रुपीज एंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने पे किया 50 रुपीज, सो टोटल 150। ओके, सो एक चालान का थोड़ा डिफरेंट सेक्शन में पे कर सकते हो अभी। एंड यहाँ पर डिटेल्स है जो 150 एंड 15 इंटरेस्ट पे किया। ओके, सो ये है प्रोसीजर गाइज, हाउ टू पे TDS थ्रू चालान। So hope you understood. And if you want to learn TDS and TCS practically under New Income Tax Act 2025, then you have to go to my website hamidsmanlearninghub.com and you can join 4 days TDS live master class from here. ओके, यहाँ पर मैंने पूरा मैंने ये जो 4 डेज का लाइव मास्टर क्लास है अंडर इनकम टैक्स 25, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 25 है। ओके, यहाँ पर आपको 4 दिन में आपको पूरा TDS एंड TCS का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। On day 1 I'll tell you about what is TDS, TCS, 10 number, due dates, important sections, okay, interest, late filing fee. On day 2 I'll tell you about how to pay TDS through Challan, TDS return filing for vendors, how to submit the return online and offline. On day 3 I'll tell you about how to pay, how to calculate TDS on salary, how to file the TDS return for salary, TDS का जो पोर्टल है ट्रेसेस, हाउ टू रजिस्टर ऑन ट्रेसेस, ठीक है, एंड ट्रेसेस ओवरव्यू। ऑन डे 4 आई टेल यू अबाउट ट्रेसेस ओवरव्यू, हाउ टू चेक चालान स्टेटस, हाउ टू करेक्ट चालान ऑनलाइन, हाउ टू डाउनलोड रिक्वेस्ट जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, हाउ टू रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर and correction return, how to file correction return in various situations, how to download and generate form 16, form 16A and TCS certificate, okay, and how to become tax expert. So if you're interested guys, you have to join my 4 days TDS live master class. So अगर आपको वीडियो अच्छे लगे so like and share जरूर करना and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.